Hello everyone, welcome to the project 7, which is a part of 25 topics, 25 projects of SQL series. This video will be based on distinct keyword, and the database which we are going to use is store management database. 6 videos of this series have already been released. You can please check them. First of all, let's understand some details about the distinct keyword. So distinct keyword is used to remove the duplicate values from the result set. So suppose we have one column called country. There are different countries are mentioned, like India is mentioned 3 times. USA is there 2 times, right? So if we apply this distinct keyword, then the result that we get will be one time India, then USA, and the remaining one, which is Canada. Okay, so it basically ensures that there will be no duplicate values, only unique values are allowed in distinct keyword application. Now, if you talk about the multiple columns, अगर हमारे पास multiple columns हैं, then इसमें जो uniqueness है वो defined होगी by combining them. Okay, like Mumbai, India, so they both will be termed as duplicate. Mumbai, India, they both will be termed as duplicate. Suppose there is Mumbai, USA, then this is not a case of duplicacy. So here we can see the distinct value from the multiple columns are Mumbai, India. Now Delhi, India is written 2 times, so Delhi, India. Then Toronto, Canada, so Toronto, Canada. And then New York, USA and New York, USA. So this is for the multiple columns. Now some very important points about the distinct keyword is that it will be applied after filtering, which is where clause, and before the sorting. Okay, after filtering and before sorting. Now distinct only affects the result set. It has nothing to do with the stored database. Stored database के साथ ये कोई छेड़खानी नहीं करता है. Now इसको हम सब queries के अंदर भी use कर सकते हैं. So now let's start with our 10 queries. First of all, let's have a look at our database and tables. So this is the database, which is a store. In this, all tables are stored and all values are there, right? See, we have here total 4 tables. We have here total 4 tables, and we are going to work in this database. Database कैसे create करना है, tables कैसे create करनी है, उसमें data कैसे populate करना है, इसका एक separate video बनाया हुआ है. Guys, please check that video and firstly create database and all the tables if you haven't created it yet. Then you can come back again and then start your queries. So first of all, we have to instruct SQL that we are going to use this particular database, which is a store. So for that, we will write use store. Okay. Now we will go with our first query, and first query says to list all unique cities. Okay, so अब हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन से कॉलम सेलेक्ट करें. किसी भी क्वेरी को परफॉर्म करने से पहले we have to train our brain in this way, like which column firstly we have to select, then which SQL concept we are going to use in this particular query. Okay, so for this, what column we are going to use is unique cities they are talking about, right? Unique cities. So the column that we are going to take will be city, and let's have a look कि city किस table में है. So एक बार सारी tables हम open कर लेते हैं. Okay, so here you can see the product table, orders table, order details table and customers table. So city column जो है वो customers table में exist करता है, right? Okay. इससे हम समझते हैं, इससे थोड़ा सा इजी रहेगा हमारी क्वेरीज को अंडरस्टैंड करना. सो इट इज आस्किंग फॉर द यूनिक सिटीज. ये हमारी कस्टमर टेबल है जिसमें सिटीज मेंशन है. ओके, नाउ जो भी हम कोड लिखेंगे, जो भी हमें आउटपुट मिलेगा, उसमें सिटीज आएंगी विद नो डुप्लीकेट वैल्यूज. सी मुंबई इट इज हियर ओनली 1 टाइम, तो डुप्लीकेट वैल्यू इज डिलीटेड. दिल्ली is deleted. Then कोलकाता. So we have the distinct value of this city. नाउ इसकी कोडिंग कैसे करनी है, अब हम उस पे चलते हैं. सो हमको कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स एसक्यूएल के यहाँ यूज करने होंगे. सो द फर्स्ट वन विल बी सेलेक्ट. ओके, एंड देन वी हैव टू यूज फ्रॉम. व्हाई? बिकॉज हमको सबसे पहले
कॉलम सेलेक्ट करने होंगे. सो कॉलम कौन सा हमें चाहिए? कॉलम विल बी सिटी, बट हमें यूनिक सिटीज चाहिए. सो बिफोर दैट वी विल यूज डिस्टिंक्ट. ओके, नाउ अब आता है किस टेबल में ये सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है. सो आफ्टर फ्रॉम वी विल राइट इट इज इन कस्टमर्स टेबल एंड देन कोलन. नाउ रन इट. Here we have all the unique cities. Alright, now come to the query number 2, and this query is saying to count unique customers who placed orders. Okay, we have to count the unique customers who placed orders. So first of all we need to know कि किस column को select करना है. So we need to select the customer डिटेल कॉलम. कस्टमर किस कॉलम में मेंशन है? सो ये मेंशन है कस्टमर आईडी के नेम से इन द ऑर्डर्स टेबल. ओके, दिस इज ऑल व्हाट वी वांट टू गेट द यूनिक कस्टमर्स. ओके, और हमें काउंटिंग करनी है उनकी. तो जो कॉन्सेप्ट्स हम एसक्यूएल के यूज करेंगे वो होंगे क्या? वो होंगे डिस्टिंक्ट फॉर द यूनिकनेस, एंड देन वी विल यूज द काउंट फंक्शन व्हिच इज एग्रीगेट फंक्शन. ओके, एंड द सेलेक्ट वन. सो क्विकली राइट डाउन द कोडिंग पार्ट. So for that we will write select count distinct and then the column name from which we want to extract the unique value. So it is customer ID, and we'll give it one alias name, unique customers I'm giving. Now the name of the table, so it is from orders table, right? Now once you will run it, we will get the list of unique customers who placed the order. There are total 50 unique customers we have. Okay, now come to the query number 3, and this query says to find the customers who ordered more than once. Means repeat buyers. We want the repeat buyers. So for that, firstly let's have a look over here. So firstly we should know what column we need to select. Okay, so what column we need to select? We need to select customer ID because it is saying to find the customer. So for that we need customer ID or customer name, but here we will write customer ID. Who ordered more than once? Who ordered more than once? So उसके लिए हमारे पास suppose ये orders की table है जहाँ order ID mention है and customer ID. अब अगर कोई कस्टमर जिसकी आईडी 1 है, अगर उसने मोर देन वंस ऑर्डर किया है, देन डेफिनेटली यहाँ पे रिपीटेड वे में उसको उसकी ऑर्डर आईडी उसकी कस्टमर आईडी मेंशन. ठीक, जैसे कस्टमर 1 ने यहाँ ऑर्डर प्लेस किया, फिर उसने ऑर्डर प्लेस किया, इट मींस इसने मोर देन वन टाइम ऑर्डर प्लेस किया है. तो अगर हम सिंपली इन रोज को काउंट कर लें, देन वी कैन गेट द काउंट ऑफ द कस्टमर्स हु हैव ऑर्डर्स रिपीटेडली, राइट? So for that, what we need to do, we have to use the group by function. Customer ID के बेस पे हम ग्रुपिंग करेंगे. So customer 1 ने जिसकी ID 1 है उसने 2 times ऑर्डर किया. Customer जिनकी ID 2 है उन्होंने भी 2 times ऑर्डर किया. Then जिनके 3 है उन्होंने 1 time and 4 वाले ने 1 time ऑर्डर किया. फिर हम यहाँ पे एक और फिल्टर का यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें हम have लिखेंगे. ओके, having का यूज होने वाला है यहाँ पे. उस फिल्ट्रेशन से हमें क्या मिलेगा? हमें ये वाली वैल्यूज मिल जाएंगी जो मोर देन 1 है. अब ये कैसे करेंगे इसको हम MySQL पे देखते हैं एक बार. सो फॉर दैट वी विल राइट सेलेक्ट कस्टमर ID count of all rows as order count. जब काउंट करेंगे वो जिस कॉलम में स्टोर होगा उस कॉलम का नाम हम यहाँ देते हैं ऑर्डर काउंट. ये सारा किस टेबल्स में से हम ले रहे हैं? ये ले रहे हैं ऑर्डर्स टेबल में से. सो फ्रॉम ऑर्डर नाउ वी नीड टू डू द ग्रुप बाय. सो ग्रुप बाय व्हाट? कस्टमर आईडी, एंड देन वी विल यूज फिल्ट्रेशन व्हिच इज हैविंग. सो वेयर काउंट इज ग्रेटर देन 1. दिस इज ऑल व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. नाउ रन इट. सो हियर वी हैव दीज कस्टमर आईडीज who have placed order more than 1 time. Now come to our fourth query, and it says to list the unique products categories sold. We need to get the list of unique product categories sold. Okay. So first of all, let's have a look कि हमें
कॉलम्स कौन से सेलेक्ट करने हैं? सो एज वी वांट द यूनिक प्रोडक्ट कैटेगरी, right? So we have to select the category column from this product table. In the product table you can see there is one category column. This is all what we have to select. Now कौन से हम SQL concepts use करेंगे? So हमें unique values चाहिए, right? So that's why we will use the distinct. Okay, distinct keyword. We will write select distinct category from products table. This is it. Now run it. And here we have the unique categories name, which is electronics, furniture and the kitchen. Now come to our query number 5, which is saying to find orders containing distinct products. वो ऑर्डर्स हमें निकालने हैं जो डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट को कंटेन करते हैं, मतलब जिसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं, डुप्लीकेट आइटम नहीं है. So, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम कौन से कॉलम सेलेक्ट करें और वो किस टेबल में अवेलेबल होंगे. सो वी नीड टू फाइंड द ऑर्डर्स, राइट? फॉर दैट वी विल सेलेक्ट द ऑर्डर आईडी. व्हाट एल्स? वी वांट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास प्रोडक्ट आईडी होनी चाहिए. सो वी विल सेलेक्ट द प्रोडक्ट आईडी ऑल्सो. ओके, नाउ ये जो डेटा है ये किस टेबल में अवेलेबल है? सो ये अवेलेबल है ऑर्डर्स डिटेल टेबल में अवेलेबल है ये डेटा, राइट? अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन से SQL कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ यूज करेंगे. सो वी हैव टू बेसिकली यूज सेलेक्ट, जिसमें हम ये कॉलम्स बताएंगे. देन वी हैव टू यूज द डिस्टिंक्ट सो दैट देयर विल बी नो डुप्लीकेट आइटम. एंड देन एट लास्ट देयर विल बी ग्रुप बाय. ग्रुप बाय के बेस पे हम इनको कैटेगराइज करेंगे. एंड देन देयर विल बी वन हैविंग कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ यूज करेंगे. सो जब हम ग्रुपिंग करते हैं बाय द ऑर्डर आईडी के बेस पे जब हमने ग्रुपिंग करी तो हमने देखा जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आए हैं वो आए हैं ऑर्डर आईडी 1 को पहले लेते हैं. ऑर्डर आईडी 1 में ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, ठीक है, ए है, बी है. इज देयर एनीथिंग एल्स? नो. ऑर्डर आईडी 1 में हमारे पास ए एंड बी है, राइट? अब अगर हम इनकी काउंटिंग करेंगे, काउंट करते हैं प्रोडक्ट आईडीज को, सो देयर आर टोटल 3 वैल्यूज. ओके, ऑर्डर आईडी 2 की अगर बात करें तो ऑर्डर आईडी 2 में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आए हैं वो सी और डी आए हैं. इनकी काउंटिंग करेंगे सो इट इज 2. एंड सेम फॉर द प्रोडक्ट आईडी ऑर्डर आईडी 3 एंड 4. बट देयर इज अ कैच दैट जब हम डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी की बात करेंगे, अब हम सिर्फ प्रोडक्ट आईडी काउंट नहीं कर रहे हैं, अब हम डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी काउंट कर रहे हैं. सो हम इसको अगर चेक करें तो यहाँ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी कितनी है? 2 है, राइट? इसमें कितनी है डिस्टिंक्ट? 2 है. इसमें 1 है, इसमें 2 है, right? So what we want from here that we have to find the orders that contain distinct products. हमें वो ही orders चाहिए सिर्फ जो distinct product को contain कर रहे हैं. So इसमें order ID 2 वाला order distinct products contain कर रहा है और order ID 4 वाला order distinct products को contain कर रहा है. Unique orders हैं इनके पास. So जो हमें final output मिलेगा उसमें सिर्फ ये 2 rows आएंगी, this row and this row. अब ये रोज आएंगे कैसे? उसके लिए जब हम फिल्ट्रेशन यूज करेंगे विच इज हैविंग, वहां पे हम मेंशन करेंगे दैट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी विल बी इक्वल टू द काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी. सी, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी विल बी इक्वल टू द काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी. ओके, बिकॉज ये हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसको लिखने का एक ये वे है. सो नाउ लेट्स डू द कोडिंग पार्ट. सो वी विल राइट सेलेक्ट ऑर्डर आईडी and count of distinct order product ID as unique products, and this data is available in order details. So from order details table, now we need to use group by. Grouping करनी है हमें on the basis of order ID, and then we will use this having. So where count of distinct product ID is equal to the count of product ID. This is what we have discussed. So once we will run it, we can see that ये order IDs हैं जिनके पास unique products थे. इसमें कोई भी product repeat नहीं हुआ है. Okay, now come to the query number 6, and query number 6 saying to get the
unique products order by a specific customer. सपोज ये जो स्पेसिफिक कस्टमर है उसकी आईडी है 30. ओके, अब इसको हम कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी कि क्वेरी के थ्रू हम कौन कौन से कॉलम्स यूज करने वाले हैं. सो वी वांट टू गेट द यूनिक प्रोडक्ट्स. ठीक है, हमें यूनिक प्रोडक्ट्स चाहिए. सो उसके लिए हमें चाहिए होगा प्रोडक्ट आईडी, राइट? प्रोडक्ट्स के लिए हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए होगी एंड प्रोडक्ट आईडी इज अवेलेबल हियर इन दिस प्रोडक्ट टेबल. देन हमें चाहिए होगा ऑर्डर आईडी, ओके, बिकॉज वो ऑर्डर करे जा रहे हैं किसी कस्टमर के थ्रू. सो ऑर्डर आईडी इज अवेलेबल इन दिस ऑर्डर टेबल, ओके. And we also want to have the product name. This is also available in this. Okay. Now, दो tables हमें चाहिए, orders table and the product table. One more thing, by a specific customer here. So मतलब हमें customer related detail वाला column भी चाहिए. So वो हमें available होगा customer ID में, जिसमें सारे उनके IDs mention होगी, right? So ये वाली table और ये वाली table तो mandatory में चाहिए. बट प्रॉब्लम ये है कि अब इन दोनों टेबल को हम कंबाइन करके यूज कैसे करें, क्योंकि इन दोनों में ही अलग अलग कॉलम्स हैं. कोई भी एक हमको ऐसा कॉलम नहीं मिल रहा है जो ज्वाइन करा सके, जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे. सो फॉर दैट वी नीड दिस टेबल आल्सो व्हिच इज ऑर्डर डिटेल्स टेबल, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट आईडी भी है एंड ऑर्डर आईडी भी है. ठीक है, सो ये इसके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रही है और ये इसके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रही है. सो बाय दिस वे ये तीनों ही टेबल आपस में सिंक हो जाएंगी. ओके, तो हम यहाँ पे ज्वाइनिंग यूज करेंगे, ज्वाइन यूज करेंगे. ज्वाइन करने से क्या होगा, हमारे पास कस्टमर आईडी आ जाएगी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम सब एक ही टेबल में अवेलेबल हो जाएंगे. ओके, नाउ हमारे पास अब अवेलेबल हो गया. अब हमें ये चाहिए कि कोई स्पेसिफिक कस्टमर है, सपोज कस्टमर 1001 है, इनके ही हमें डेटा चाहिए और इन्होंने यूनिक प्रोडक्ट्स क्या क्या ऑर्डर किए हैं वो बस हमको एज अ रिजल्ट मिल जाए. ठीक है, सो जब हमने इनको ज्वाइन किया और हमने कस्टमर आईडी 1001 को ही स्पेसिफाई करा, तब हमने ये देखा कि ये प्रोडक्ट्स इन्होंने ऑर्डर करे थे. ठीक है, अब हमें यहाँ पे फिर से एक फिल्ट्रेशन लगाना होगा जिससे कि सिर्फ यूनिक आइटम्स यहाँ पे मेंशन हो. मतलब पेन 2 बार है तो 2 बार ना के 1 बार आ जाए, नोटबुक आ जाए एंड देन इरेजर आ जाए. ठीक है, सो दिस आउटपुट इज व्हाट वी वांट. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट आवर कोडिंग पार्ट. सो वहां से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. So let's write it. First of all, we need to select distinct product name or product ID. So हम यहाँ product name ले रहे हैं. Product name और product name हमारे यहाँ name से mention है उसका column. So distinct name and this is in the product table. So we can write it in this way also, that P dot product name. P signifies the product table. Now from order details, ओके, ऑर्डर डिटेल्स को हमने ओडी बोल दिया और इसको आप ज्वाइन करेंगे. हम ज्वाइन ऑर्डर्स विच इज ओ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर डिटेल्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं ऑर्डर टेबल के साथ ऑन द बेसिस ऑफ वेयर ऑर्डर डिटेल्स टेबल में जो ऑर्डर आईडी है इक्वल्स टू द ऑर्डर्स टेबल की ऑर्डर आईडी. ओके, वन मोर ज्वाइनिंग वी विल डू. ज्वाइन प्रोडक्ट्स इसको हमने P से सिग्निफाई किया था. सो प्रोडक्ट्स P ऑन ऑर्डर डिटेल्स में जो प्रोडक्ट आईडी है if that is equal to the product table's product ID. Okay, this is the base of our joining. Now we have to write the condition which is where customer ID equals 30. यहां हमने 30 लिए. अब इसको जब हम रन करेंगे ओके, देन वी कैन सी दैट जो कस्टमर था जिसकी आईडी 30 थी उसने ये 3 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे विच इज हेडफोन, ब्लेंडर एंड द वैक्यूम क्लीनर. अगर हम यहाँ पे चेंज करके 25 करते हैं देन लेट्स चेक अगेन व्हाट इज द प्रोडक्ट्स. ओके, देन देयर आर नो प्रोडक्ट्स. If we take it as 40, okay, 40 customer ID वाले कस्टमर ने ये distinct products ऑर्डर किए थे which is microwave, study table and so on. Okay, now come to the query number 7 and it says to list the dates when orders were placed without any duplicates.
विदाउट डुप्लीकेट्स. ओके, सो हमें वो डेट्स फाइंड करनी है जब ऑर्डर्स प्लेस हुए थे बट उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना हो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी कौन से कॉलम्स हमें चाहिए होंगे. सो वी वांट टू लिस्ट द डेट, राइट. सो हमें डेट कॉलम चाहिए होगा, ऑर्डर डेट, व्हेन ऑर्डर्स वर प्लेस्ड. इट मींस हमें ऑर्डर डेट का कॉलम चाहिए. एनीथिंग एल्स? नो, वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स. सो ऑर्डर डेट जो कॉलम है वो अवेलेबल है आपका ऑर्डर्स टेबल में. सो विल राइट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, नाउ डेट फंक्शन एंड हियर ऑर्डर डेट as order day from orders table, and let's run it. So here we have all the unique order dates. Now come to the query 8, and it says to find the customers who bought products from multiple categories. Okay, so to get the list of the customers who bought products from multiple categories, we need the columns. और कौन से columns हमें चाहिए होंगे? वो होंगे category चाहिए हमें एक तो, right. Then we want the product ID because product की यहाँ बात हो रही है. Then we want the order ID क्योंकि customer है, उन्होंने order place किया है, order ID आएगी. And then we want the customer ID and customer name as well. Okay, so अब देखते हैं ये सारा कुछ कहाँ कहाँ अवेलेबल है. So customer ID and customer name is available in customers table. Then order ID is available in orders table. Then product ID for the products. Product ID is available in the order details table. And then the category, this is available in the products table. So there are 4 tables we are going to use. And we have to join these tables. अलग अलग हम नहीं use कर सकते. We have to join them. So after joining, the result that we will get will be this, something like this, where it will be customer ID, customer name, product ID, and the category. Right? अब जब हम count करेंगे unique categories को per customer के according हम जब grouping करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि customer जिसके ID 1 है, ठीक है, उन्होंने total कितने products लिए हैं? 1, 2, 3. Okay, and ये जो हैं different category को ही belong करते हैं. It means they are unique. So we will write here 3. Okay, and this is unique. अगर हम Bob की बात करें तो इसने multiple categories choose ही नहीं की है. Uniqueness तो बात की बात है. Then same for the Carol. इन्होंने भी एक ही category से product order किया है. अब जो final हमारा output आएगा जहां पे हमें चाहिए कि मल्टीपल कैटेगरी से ऑर्डर प्लेस किया हो कस्टमर ने, तो वो कस्टमर है कस्टमर ID 1 जिनका नाम है एलिस और इन्होंने 3 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं. ओके, नाउ अब हम इसका कोड लिखते हैं. सो वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द ऑर्डर टेबल कस्टमर ID, देन फ्रॉम द कस्टमर टेबल द नेम ऑफ द कस्टमर, एंड देन वी विल काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट टेबल में से कैटेगरी as unique category. Okay, now from orders table अब हमें join यूज करना होगा. सो हम किसको किसको ज्वाइन करेंगे? ऑर्डर्स को ऑर्डर डिटेल्स के साथ. ऑर्डर डिटेल्स which is OD on from the orders table, order ID will be equal to the order details tables order ID. Now again we will join it with the product table on product table में जो product ID है will be equal to the order details की product ID. We will use join again, and then the customers on customer table की customer ID will be equal to the orders table की customer ID. I hope there will be no spelling error. Now group by orders table में जो customer ID है उसके बेस पे एंड कस्टमर टेबल के कस्टमर नेम के बेस पर.
कस्टमर टेबल में हमारे पास नेम है, यस, ओके। एंड देन हैविंग काउंट डिस्टिंक्ट, एक से ज्यादा होगा तभी हम कह पाएंगे कि हाँ इन्होंने मल्टीपल कैटेगरीज में ऑर्डर प्लेस किया है। सो कैटेगरी विल बी ग्रेटर देन 1, दिस इज इट, ओके। नाउ लेट्स सी, so there is some error which is some spelling error, c dot something, okay here, so यहाँ पे है ये customer ID, now run it again, customer ID, so many spelling errors, p dot product ID, order ID, so this is our result। यहाँ पे कस्टमर ID 1 अमन गुप्ता, इन्होंने 2 यूनिक कैटेगरीज में ऑर्डर प्लेस किया था, देन प्रिया शर्मा, इन्होंने 3 यूनिक कैटेगरीज में, एंड सो ऑन। ओके, नाउ कम टू आवर क्वेरी नंबर 9 and it says to list the products that have never been ordered. This one is interesting. So for that, okay, so the products that have never been ordered, for that what we can do, so हम उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना लेंगे जिनका ऑर्डर प्लेस किया गया था, राइट। वो कहाँ पे मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे ऑर्डर डिटेल्स टेबल में। ऑर्डर डिटेल्स टेबल में वो सारे प्रोडक्ट्स आईडी अवेलेबल होंगी जिनको कभी ना कभी जिनको ऑर्डर प्लेस किया गया था, ओके। फिर हम उनको एक लिस्ट में रख लेंगे, एंड देन इन प्रोडक्ट आईडीज के अलावा जितनी भी प्रोडक्ट आईडी बची इस प्रोडक्ट टेबल में, क्योंकि एक प्रोडक्ट टेबल है जिसमें सारे प्रोडक्ट आईडीज हमारे पास हैं, अब इसमें से कुछ का ही ऑर्डर प्लेस हुआ है और कुछ रह गई है, ठीक है। तो जिनको ऑर्डर प्लेस हो गया है वो हमें ऑर्डर डिटेल्स टेबल में मिल जाएंगी, उसको हम एक लिस्ट के फॉर्म में रख लेंगे, ओके। देन हम एक फिल्ट्रेशन लगाएंगे कि वो प्रोडक्ट आईडी जो इस लिस्ट में नहीं है बस वो हमारे सामने आ जाए, ओके। सो ये कैसे करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक कि हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए होंगे इसके लिए। सो इसके लिए हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए होगा क्योंकि हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, एंड प्रोडक्ट का नेम भी चाहिए, ओके। ये हमें कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं, प्रोडक्ट टेबल में और ऑर्डर डिटेल्स टेबल में मिलेंगे, ओके। नाउ यहाँ पे अब हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे, सो फॉर दैट वी विल यूज वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड सब क्वेरी। एक स्मॉल क्वेरी के अंदर एक क्वेरी हम लिखेंगे विच इज कॉल्ड सब क्वेरी। इसको आइए देखते हैं हम कैसे यूज करेंगे। सो हम वो लिस्ट बना लेते हैं पहले जो प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेस हो चुके थे, ठीक है। सो फॉर दैट वी विल राइट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स टेबल, ओके। यहां से हमें वो लिस्ट मिल गई कि किन किन प्रोडक्ट आईडी का ऑर्डर प्लेस हुआ है, ओके। अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं। नाउ वी विल राइट सेलेक्ट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी कॉमा product dot product name from which table, from products table, where product ID not in this। अब हम इसको यहां पे ब्रैकेट लिख देंगे, ओके। सो अब जब हम इसे रन करेंगे देन हमारे पास वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो कभी भी जिनका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है। सो ये प्रोडक्ट आईडीज हैं जिनका ऑर्डर कभी प्लेस नहीं हुआ है, ओके। नाउ कम टू द क्वेरी नंबर 10 एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेरी। हियर वी हैव टू गेट द काउंट ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स सोल्ड पर कैटेगरी। सो यूनिक, हियर वी कैन सी द यूनिक प्रोडक्ट सोल्ड पर कैटेगरी के लिए हमें जो कॉलम्स चाहिए होंगे दैट विल बी प्रोडक्ट कॉलम, ओके, कैटेगरी कॉलम, एंड प्रोडक्ट कॉलम में हमें चाहिए होगा प्रोडक्ट आईडी बेसिकली। सो प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट टेबल में अवेलेबल है एंड कैटेगरी इज अवेलेबल इन द प्रोडक्ट्स टेबल अगेन, बट वी हैव टू गेट द
this thing also. So for that sold मतलब जब उसका order place हुआ होगा, so उसके लिए हमें order details की table चाहिए होगी. So let's write the code, and here we will write select category count of distinct product ID as unique products sold from products table, and where product ID is in select distinct product ID from order details, and then we will do the grouping. So group by categories. Okay. And let's run it. So there is only category, not categories. Okay, so here we have the unique product sold per category. So this is it for this video, guys. See you soon with the next project with a new topic. Take care. Bye bye.